नमस्कार। आज मु बनैबी छतु पकोड़ा। छतु पकोड़ा खाइबा को बहुत टेस्टी लगी थाए, स्पेशली वर्षा दिन में आप इवनिंग टाइम रे आपको इंस्टेंटली बनैकी एंजॉय करि परिबे। तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रेसिपी। छतु पकोड़ा बनैबा पई मु छतु को देखंतु भलो भाबरे धोईकी हळदी पानी रे धोईकी ताको एमती छोट छोट साइज रे काटि नै जाईची। देन गोटे पियाज को मु एमती छोट छोट साइज रे काटि नैची। भृसंग पत्र 8 ରୁ 10 पत्र नहीं जाइए। देन मुझे रसुण अदा कंचा लका को छेचिकी एमती नहीं जाइए। तापर मुझे बेसन गोटे कप नहीं, हाफ कप चाउर गुंड नहीं जाइए। मसला भितर मुझे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और टेस्ट अनुसार लुण नहीं जाइए। बस एतिकी। तापर मुझे छाणीबा तेल नहीं जाइए। एबे सबु जिनस को मु भल भाव मिसई नेबी और ताको अल्प अल्प पानी देकी ताको गोटे बैटर बनई नेबी। एबे देखंतु हमर छतु पकोड़ा पई छतु बैटरटा पूरा बनिक रेडी हो गला। तो एबे चलंतु हम को छाण नबा। देखंतु आम छतु पकोड़ाटा पूरा बनिक रेडी हो गलानी। कलर भी चेंज हो आसलानी। तो आपको मु काढ़ी की साइड कर नउची। अल्प टिके चाट मसला को ता ऊपर टिके स्प्रिंकल कर नउची और धनिया पत्र टिके पके नेची। तापर याकू आपण फेवरेट चटनी सहित आपण एंजॉय करि परिबे। स्पेशली वर्षा दिन रे इवनिंग टाइम रे आपण याकू बनैकी इंस्टेंटली एंजॉय करि परिबे। आज रे रेसिपी आपण को केमती लागिला आपण को एक्सपीरियंस मो सहित शेयर करिवे।